Hello students, welcome to HIS online classes. In previous lecture we had completed exercise 2.1 and today we will start exercise 2.2. But before this we have to understand two main concepts. First is value of a polynomial and second is zero of a polynomial. So the first question is what is the value of a polynomial? So इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल की हेल्प लेनी पड़ेगी. So px is equals to x square minus 3x minus 4. What is this? This is a polynomial in x variable and its degree is 2 because highest power of the variable is called the degree. Okay, और ये px क्या है? px only represent करने के लिए लिखा है यहाँ पे. Okay, and this is a polynomial in x variable, that's why we have to write x there. अगर ये y variable में होता तो यहाँ पे हमें y लिखना पड़ता. Instead of p you can write any variable. Clear? So if I replace x by 1, then I'll get p1 is equals to 1 square because this is x square. Instead of x we have to write 1. So now it become 1 square minus 3 multiply 1 minus 4. 1 square is 1 only, 3 multiply 1 is 3, 4 as it is, 1 minus 3 is minus 2, minus 4 as it is, minus 4 minus 2 and minus 4 become minus 6. Okay, so the value of the polynomial at x is equals to 1 is minus 6. Clear? ये तो समझ में आया. Instead of x instead of 1 you can put 2 also, 3 also, 4 also. Okay, तो ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या पुट करना है. ओके, सो इन आवर केस मैंने क्या पुट किया, x is equals to 1. So the value of the polynomial px is equals to x square minus 3x minus 4 at x is equals to 1 is minus 6. तो इसको लिखेंगे कैसे, the value of the polynomial px is equals to x square minus 3x minus 4 at x is equals to 1 is minus 6. Okay, so इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं. So when variable of a polynomial is replaced by any real number and real number contain rational and irrational number, okay, then the value obtained by it is called the value of the polynomial. Clear? इस पे आपके दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 2.2 में. सो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ. सो दिस इज एक्सरसाइज 2.2. Find the value of the polynomial 5x square minus 4x square plus 3 at x is equals to 0. We have to find the value of the polynomial and the polynomial is 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0. Means we have to replace this x variable by 0 and then we have to calculate the value of the polynomial. Clear? So आपको लिखना कैसे है. So first you have to write let px, और ये px रिप्रेजेंट करने के लिए है ओनली. ओके, सो लेट px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. और यहाँ पे आपको पता है x क्यों है, बिकॉज दिस इज ए पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी हैव टेक x. नाउ वी हैव टू रिप्लेस द वेरिएबल x बाय 0. सो जस्ट आई हैव रिटन पुट x इक्वल्स टू 0. Now instead of x you have to put 0. So p0 is equals to 5 multiply 0 minus 4 0 square plus 3. 5 multiply 0 is 0 only, and 0 square 0 plus 3. 4 multiply 0 is 0, then what left, 3. So the value of the polynomial px 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0 is 3. Okay, सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है. क्लियर कर सकते हो आप. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. py इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल y square minus y plus 1 at x is equals to 0. Okay, तीन पार्ट होंगे इसके. फर्स्ट we have to replace this variable this y variable by 0, and in second part we have to replace this y variable by 1, and in third part we have to replace y variable by 2. Okay, तो करना कैसे है, let first we have to write the polynomial. Okay, and then in first case we have to put y is equals to 0 and you have to calculate the value of
polynomial at y is equals to 0. So at y is equals to 0 the value of the polynomial is 1. Similarly you have to find the value of the polynomial at y is equals to 1. Okay, so instead of y you have to put 1. Okay, in third part you have to put y is equals to 2 instead of y, and you have to calculate the value of polynomial at y is equals to 2. क्लियर? तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पे. नाउ अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. सो सेकंड इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. इसको भी हम एग्जांपल समझेंगे. दिस इज अ पोलिनोमियल px is equals to 2x plus 3. Okay, this is a polynomial in x variable and its degree is 1 because highest power is 1. If I replace this variable by minus 3 by 2, then we'll get 0. Now value of the polynomial is 0 at x is equals to minus 3. Okay, the value of the polynomial px at x is equals to minus 3 is 0. तो जब आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब आपके पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो आपने रियल वैल्यू पुट की है वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 ऑफ द पोलिनोमियल. सो माइनस 3 by 2 इज़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. क्यों? क्योंकि इसको पुट करने से हमारी वैल्यू क्या आ गई पोलिनोमियल की, 0. सो माइनस 3 by 2 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. क्लियर? इसमें तो 0 नहीं आई थी, इसमें तो -6 थी फर्स्ट पार्ट में. ओके, सो ये आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. देखो यहाँ पे 0 जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल है, और अगर ये 0 आ जाती है तो जो वैल्यू हमने पुट की थी, मीन्स जो रियल नंबर हमने पुट किया था, वो आपकी 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा. ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस. When variable of a polynomial is replaced by any real number and the value of the polynomial becomes 0. बस यही डिफरेंस है दोनों में. यहाँ पे बस ये कंडीशन है आपको, when and the value of the polynomial become 0, then the real number is called the zero of a polynomial. क्लियर? सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे आपके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है. सो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है. तो थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई whether the following are zeros of a polynomial indicated against them. We have to verify that given number is a polynomial or not. Okay, so first polynomial is px is equals to 3x plus 1 and its value is given x is equals to minus 1 by 3. तो हम क्या करेंगे, इसको just put करेंगे. If we'll get 0 then it will be a zeros of the polynomial, otherwise not. Okay, सो फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए किया है, आपको कैसे करना है वो दिखाने के लिए. सो फर्स्ट पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1. सो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड वी हैव टू रिप्लेस x बाय -1 by 3 बिकॉज यही आपको दिया हुआ है. यहाँ पे हमें ओनली वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल्स टू -1 by 3 मीन्स -1 by 3 इज ए जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल और नॉट ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. सो हमें रिप्लेस करना है. अगर 0 आएगा तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा. ओके, सो नाउ इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू राइट -1 by 3. सो 3 एज इट इज. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू पुट -1 by 3. ओके, 3 and 3 cancel. So what left? -1 plus 1. -1 plus 1 is 0. Now value of the polynomial is 0. So we can say x is equals to -1 by 3 is the zeros of the polynomial. So लिखना कैसे आपको, since px is equals to 0, so -1 by 3 is a zero of a given polynomial. अगर ये 0 नहीं होता तो then we have to write since px is not equals to 0, we have to use not equal sign, not equals to 0, so -1 by 3 is not a zeros of the given polynomial. Okay, and this sixth part. Okay, sixth part is px is equals to lx plus m. Okay, and x is equals to minus m by l. So x is the variable and l and m are real numbers. So instead of x we have to put m by l, minus m by l. So this is a polynomial px is equals to l x plus m, and instead of x we have to put minus m by l. So px is equals to l as it is instead of x, because x is the variable and its value is minus m by l. Now l cancel, so minus m plus m is 0.
So we can write since px is 0 is equals to 0, so minus m by l is the zeros of the given polynomial. अगर ये ज़ीरो नहीं आता आपका वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, अगर ज़ीरोज़ नहीं होती तो हम उस केस में लिखते since px is not equal to 0, so minus m by l is not a zeros of the given polynomial. बट अभी 0 है तो हमें लिखना है yes it is a zeros of the given polynomial. Clear? Now fourth question, find the zero of a polynomial in each of the following cases. So first question is px is equals to x plus 5. This is a polynomial in x variable, okay, and we have to find its zero. So to find zero, just put px is equals to 0 and calculate the value of variable, and in this case variable is x. So put x equals to 0, so instead of px we have to put 0, and this now equation you have to calculate the value of the variable, and if I transfer 5 to the left hand side then it become minus 5, so value of the polynomial, value of the variable is minus 5, so we can say x is equals to minus 5 is the zeros of the given polynomial. Clear? Similarly you have to find you have to solve all the parts of third and fourth question. यहाँ पे मैंने एक सेवन्थ पार्ट भी किया है, इसको शायद आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने कर दिया ये. px seventh part is px is equals to cx plus d, comma cx is not equal 0 means c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, c is not equal 0 and c comma d are real numbers, c and d are real numbers, so variable is x. Okay, so we have to find the value of the variable means zeros of the polynomial. Clear? To find the zeros of the polynomial, put px is equals to 0. Okay, अगर ये y वेरिएबल में होता so we have to write put py is equals to 0. Okay, if this polynomial in y variable then we have to put py is equals to 0. Okay, now px is 0 and cx plus d, transfer d to the left hand side then it become minus d. If I transfer c to the left hand then it will be divided, so minus d by c, so x is equals to minus d by c is the zero of a given polynomial. Clear? So that is it for today. Okay, thank you.